Devim Saraswati Vyasam Tato Jayamudire Nashtaprayeshu Bhadreshu Nityam Bhagavase Bhagavati Uttama Shlokir Bhaktir Bhavati Naisti Krishnaya Vasudevaya Devaki Nandanaya Nanda Gopakumaraya Govindaya Namo Namah Jai Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shiva Sadi Gaura Bhakta Hare Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare Hare. So we are continuing our study of Bhakti Vaibhav, 3rd Canto, Chapter 9, the last verses, the benediction by the Supreme Lord Garbhodakshaya Vishnu to Brahma on being pleased by his penance and his prayers, and when he was enlightened from within the heart and when he has developed the firm faith, then Lord said, I am the ultimate dearest object. I am the ultimate dearest object. So this is the philosophy. Prabhupada's purport we will see, but this is the philosophy is like this. That Lord has indicated that he is very dear to those who have pure bhakti without material gunas. But I alone should also be dear to all jivas. For devotees I am dear, that's all right, but for all jivas I am dear. They should hold me dear. This is an injunction. This is my order. Why? I am the soul, Atma, the Paramatma of all the jivas, Atmana. For this reason, Yatkriti, body and family becomes dear to the person. Affection for wife and son is based on one's body. Affection for one's body is based on the jiva within the body. And affection for the jiva is based on Paramatma. And affection for Paramatma is nature. The affection for the jiva and the preceding item is figurative only. And the affection for each item is successively less. It means more affection is to the Paramatma. But how can you make a command and say, Jiva should act with rati for me? Rati is something which is to be attained. The command is uttered to act when rati does not exist. The answer is as follows. The Jiva fit for Maya, but not for Paramatma. Humans who have fallen into the Maya's bondage experience object of Maya. But even for the Jiva, Maya is only superimposed. Though natural affection for Paramatma exists, because of the lack of experience of Paramatma, the Jiva does not have affection for Paramatma. He is like a wealthy merchant who does not know that he possesses wealth, and thus he acts like a poor man. Analogy. Prabhupada has given the same analogy. Thus, it is enjoined that the Jiva should have affection. It is an injunction. However, though Paramatma is dearest, it is seen that even though the Jnanis may realize him directly, there is no rati for Paramatma. And Prem does not develop. They know Paramatma, but they have no affection, no rati for Paramatma. For the devotees, alone, Paramatma exists in all times and space, is the dearest. This is not so for the Jnanis. Now the analogy. Same analogy is in Prabhupada's purport. So we see this and then go to the Prabhupada's purport. Though the sun dispels the pain of cold and gives happiness to the eyes with light, and though this is experienced by all, some people do not appreciate this. This is because they have no attachment to the sun. And though the sun gives happiness to them, it is also indifferent to them because sun has no attachment to them either. The Jnani do not rejoice in the Brahm, though it gives happiness of realizing the self and destroy ignorance.
because they do not have great attachment to it. Brahma also, giving them realization of the impersonal aspect, is indifferent to them. When devotees of the sun god, whether having vision or blind, sees the sun who is satisfied by his devotion, as having hands and feet, along with the chariot and horses, sun god, he brings the sun under his control by his devotion. Similarly, Jiva, whether liberated or bondage, delights in the Paramatma with realization of the qualities and brings Paramatma under his control by his devotion. Thus, Paramatma is most dear to the devotees, whether they are pure bhakta or mixed bhakta. Where, however, Paramatma is not most dear to the jnanis with a small amount of bhakti. Thus, when Paramatma himself say, "Oh, one should show affection for me," it should be considered the relation of the devotee only. Or the sentence can be, for this reason, Ata, one should show affection for me, the result of which is that the intelligent man will have affection for the body, Deha Adi Priya, using the body senses to perfect bhakti. Such person is not hanker for liberation. So it's a lengthy purport. Now we will go to Srila Prabhupada's purport and try to relate this. Yes, Prabhu. The Supreme Lord, the personality of Godhead, is the dearest in both the conditioned and the liberated states. When a person does not know that the Lord is the only dearmost object, then he is in the conditioned state of life. And when one knows perfectly well that the Lord is the only dearmost object, he is considered to be liberated. So this is the first who is conditioned and who is liberated? The one who knows the Lord is dearest is liberated. One who don't know is a condition. This is a very simple first thing. Okay. There are degrees of knowing one's relationship with the Lord, depending on the degree of realization as to why the Supreme Lord is the dearmost object of every living being. The real reason is clearly stated in Bhagavad Gita 15.7. Mamayvamsa jiva loka jiva bhuta sanatana. The living entities are eternally parts and parcels of the Supreme Lord. The living entity is called the Atma, and the Lord is called the Paramatma. The living entity is called Brahman, and the Lord is called Parabrahman, or the Parameshwara, Ishvara Parama Krishna. The conditioned souls who do not have self-realization accept the material body as a dearmost. The idea of the dearmost is then spread all over the body, but both concentrated and extended. The attachment for one's own body and its extensions like children and relatives is actually developed on the basis of the real living entity. As soon as the real living entity is out of the body, even the body of the most dear son is no longer attractive. Therefore, the living spark or the eternal part of the Supreme is the real basis of affection and not the body. Because the living entities are also parts of the whole living entity, that Supreme living entity is the factual basis of affection for all. One who has forgotten the basic principle of his love for everything has only flickering love because he is in Maya. The more one is affected by the principle of Maya, the more he is detached from the basic principle of love. One cannot factually love anything unless he is fully developed in the loving service of the Lord. In the present verse, stress is given to the focusing love upon the Supreme Personality of Godhead. The word Kuryat is significant here. This means one must have it. It is just to stress that we must have more and more attachment to the principle of love. The influence of Maya is experienced by the part and parcel spiritual entity, but it cannot influence the super soul, the Paramatma. The Mayavadi philosophers, accepting the influence of Maya on the living entity, want to become one with the Paramatma. But because they have no actual love for Paramatma, they remain ever entrapped by the influence of Maya and are unable to approach the vicinity of Paramatma.
This inability is due to their lack of affection for Paramatma. A rich miser does not know how to utilize his wealth, and therefore, in spite of his being very rich, his miserly behavior keeps him everlastingly a poor man. On the other hand, a person who knows how to utilize wealth can quickly become a rich man even with a small credit balance. The eyes and the sun are very intimately related because without sunlight, the eyes are unable to see. But the other parts of the body, being attached to the sun as a source of warmth, take more advantage of the sun than do the eyes. Without possessing affection for the sun, the eyes cannot bear the rays of the sun. Or in other words, such eyes have no capacity to understand the utility of the sun rays. Similarly, the empiric philosophers, despite their theoretical knowledge of Brahman, cannot utilize the mercy of the Supreme Brahman because they lack affection. So, many impersonal philosophers remain everlastingly under the influence of Maya because although they indulge in theoretical knowledge of Brahman, they do not develop affection for Brahman, nor do they have any scope for development of affection because of their defective method. A devotee of the sun god, even though devoid of sun eyesight, can see the sun god as he is even from this planet, whereas one who is not the devotee of the sun cannot even bear the glaring sunlight. Similarly, by devotional service, even though one is not on the level of a gnani, one can see the personality of Godhead within himself due to his development of pure love. In all circumstances, one should try to develop love of Godhead, and that will solve all contending problems. So there are same two analogies by Srila Prabhupada and Vishwanath Chakravarti Thakur, but so same thought is in 10, 40, 25, 10, 14, 50 to 55. The same thing is there. Before we close the class, I was asking the verse. That verse is from 11th canto, 5th chapter, verse number 3, right? You give the mic, you read the verse first. येषां पुरुषं साक्षात् आत्मप्रभवम् ईश्वरं न भजन्ति अवजानन्ति स्थानात् भ्रष्टः पतन्ति अधः. If any of the members of the four varnas and four ashramas fail to worship or intentionally disrespect the personality of Godhead, who is the source of their own creation, they will fall down from their position into hellish state of life. Is it clear? So this is the verse I was quoting. There's a one other reference by pushing the one button, everything will be bright. Nectar of devotion. Concept of love in the introduction. Love from center to the family, family to the nation, nation to the international, but it's never satisfied until unless we love Krishna. And then Prabhupada said, by pressing one button, it means loving Krishna, everything become enlightened. So that reference is there, that ultimately we have to love Krishna. Now these two analogies, how can you explain? Well, we have now the both purpose. Miserly people, he has a wealth, it means he has a Paramatma inside and he has a love of God already inside, but he don't know, therefore he is poor. So the wealth is Paramatma within the heart and love of God within the heart. And since he don't know, therefore he is poor, therefore he is miser. And the one who has a little wealth, it means little love of God and devotion,
though, then he is better than a miser because he is rich, because he is devotee of a Lord. The other analogy is sun and the eyes and the body. The analogy is Jnani is considered to the eyes, and Supreme Lord is considered to the God, sun. Since the eyes has no affection for the sun, therefore he cannot take the advantage of heat and light of the sun. Though the body can get, but eyes cannot see. Similarly, the sun has no affection for eyes either. Therefore, the Jnanis, they never develop affection for Lord, and Lord never have affection for the Jnani, therefore they never awaken the love of God. So Brahma never reciprocate with them by affection, and they never have affection for Brahma, though Brahma give them happiness. Now, in Shanta Bhakti, which is mostly the level of Jnani, they know God is great, but they don't develop affection, therefore they are Shanta Bhakti. But the Dasya Bhakti only starts when we develop affection for Lord. As soon as Sneha starts, the relationship develops. No Sneha, it is Shanta Bhakti. God is great. You may be detached from the world. You may know God is great, but if you don't have affection for God, there is no development of Dasya Bhakti. No Swarup. No affection. Is it okay? We are going to verse number 43. For this, I forgot the answer. That Sukdev Goswami is Shantaras, but he explained about the beautiful form of the Lord and the Bhagavatam. He was in Shant Ras, but then he said, Brahmanishtu Aham. I was already fixed in Brahma realization. But Leelaya, the pastime of Krishna, has dragged me from that stage. And Adhishyati, I have studied the 18,000 verses of Bhagavatam. So, Atmaram to Sumanya. Then he speaks of this verse, Atmaram to Manya. It's even the greater souls, they are attracted by the beauty of the Supreme Lord. So, now, Sukdev Goswami, like we Shantaras, not. Usually, Shantaras examples are 4 Kumaras. But they also got the mercy of Supreme Lord. Then they develop devotion. So because they are the example of Jnanis, therefore they are in Shantarasa. But now they have a mercy, therefore they can describe it. Basically, this is their pastime. Actually, Shukha is a parrot of Radharani in the Golok Dham, so there's nothing for him new. But it's just for pastime. So, love, everybody should have rati for me. It means the creator is telling to the Brahma, the going to be the next secondary creator, that whoever you create, tell them to love me. Yes. If they don't do, they will be suffering. Sarva Vedamaye Nedam Atmana Yonina Praja Srjayatha Purva Yascha May Anusherte. The Brahma asked in the last part of the prayer that I should never forget Veda. Veda Giram. Nigam Giram. So now the blessing is you. Sarva Veda Maya Idam. Now the all Vedas will always remember with you. Atmana Yonina, you are born from Yonina, you are born from me.
Praja says, go and create living entities as before, Purvam. Jasya mai anushirti. This is important. And tell them, anushirti. By following my instruction, you can now generate the living entities as before by dint of your complete Vedic wisdom, and the body you have directly received from me, Atma Garbha, this Yoni, the supreme cause of everything. By your body composed of all the Vedas. Chakravarti Pad writes, you prayed that you should not forget the Veda, your body will be filled with Vedas, Veda Garbha. You will not forget Veda. Now you should create the progeny by your body, Atmanam, whose source is I am Atma Yoni. And you did in the previous day, as you did in the previous day. Create the progeny who are obedient to me and have bhakti. They should be obedient to me and have bhakti. Huh? Vishwanath Chakutsat proper. The word cha indicate bhakti. The word cha in the verse indicate bhakti. This means that creating would be easy since it would involve simply manifesting the various bodies. They are already existing. Last verse Shruti Pal. Maitreya Vacha Tamasa evam jagat srishte Pradhana Purusheshwaraha Yajedam Svena Rupeda Kanjanabhastryodhate. The sage Maitreya said after instructing Brahma, the creator of the universe, to expand the primeval Lord, the personality of Godhead, in his personal form, as Narayan disappeared. Srila Prabhupada is simply writing something before his activity in creating universe. Brahma saw the Lord. That is the explanation of Chaturshloki Bhagvatam. When the creation awaited Brahma's activity, Brahma saw the Lord, and therefore the Lord existed in his personal form before the creation. His eternal form is not created by the attempt of Brahma as imagined by less intelligent persons. So Lord is not created by Brahma, he was already existing. Okay, this is here 2 lines. Showing this universe to be created, the Lord disappeared with his form as Narayan. The first day of Brahma, when Brahma was born, is called Brahmakalpa. The first day when Brahma was born is called Brahmakalpa. The Lord recited 4 essential Bhagavad verses at that time. Verse number 29, 32 to 35. In the Padma Kalpa, what is called Padma Kalpa? The last day of previous half of Brahma's life. Means 50 years, the last day of his first Prarabdha. That's called Padma Kalpa. Why? Because all planets were within the lotus. Therefore it's called Padma Kalpa. The Lord also taught 4 essential verses in the form of, in this chapter, verse number 32, 33, 41, 42. So these are same like Chaturshloki Bhagavat in a different way. In a last day of the first half of Brahma's life. So one is Brahmakalpa, other is a Padmakalpa. Is it okay? Now we are going to the next chapter. The name of this chapter is Divisions of the Creation. This chapter has 4 divisions. The first section says
further questions by Vidura from Maitreya about the creation. Then 4 to 9, Brahma creates 14 planetary systems. First 3, then he was not satisfied, so he did the 14. The next is 11, 12 and 13, the characteristic of time in a brief, because the detail of time is in the chapter 11. So there's a time in brief in 3 verses. And the last section 14 to 30, 10 type of creation by 10 type of creations. The 6 are called Sarg and 4 are called Visarg. It's okay? We are going to the first section. Chakravartipad writes, in the 10th chapter, the 10 type of bodies produced by dividing elements starting with Prakriti and the general characteristics of time are described. This is the subject matter of 10th chapter. Now, this is the first section. Vidura inquire about Brahma's creation. Vidura's inquiry, 3 verses. First verse, Vidura says, Vidura vacha antrahite bhagavati Brahma loka pitamaha praja sasarja katidha daheki manase vibho. After the departure of Supreme Lord, how Brahma created something from his body and his own mind, because there was nothing else there. So, next verse. Ye chame bhagavan prishta tvai artha bhave tatma bahovittama tan vadasava anupurvena chindena sarva samshaya. O greatly learned one, kindly eradicate all my doubts and let me know of all that I have inquired from you from the beginning to the end. Srila Prabhupada writes, Vidura asked all relevant questions of Maitreya because he knew that, well that Maitreya was the right person to reply to all the points of his inquiries. This is now principle. Srila Prabhupada said, one must be confident about the qualification of his teacher. One should not approach a layman to reply to these specific spiritual inquiries. Otherwise, he is wasting time. So Prabhupada is saying one should ask the spiritual question from a spiritual qualified person, not from... This is the problem of modern people. They ask questions from common people and they make their opinion, and then you preach to them, they never understand because they have never asked from a right person. ये प्रॉब्लम है लोगों का. वो इस तरह से सुन के आएंगे बातें ऐसे कथाओं में और फिर पूछेंगे रावण के 10 सिर कैसे थे, बैलेंस कैसे करता था. क्या उसको क्या उत्तर दोगे बताओ? कोई क्वेश्चन आंसर नहीं, क्योंकि कोई क्वेश्चन ही ऐसा है, क्या करोगे? नेक्स्ट लास्ट वर्स ऑफ दिस सेक्शन. सूत वाचा, ये सूत बीच में आ गया, इसका मतलब साइमल्टेनियस बात चल रही है सुखदेव में और परीक्षित में, सूता है सनक आदि में. तो इसका प्रभुपाद ने थोड़ा परपट लिखा है. एवं संचोदितस्तेन क्षत्राः कौशावरी मुनिः प्रीतः प्रयत्ताः तान् प्रश्नान् हृदयस्थम् अथ भार्गव. इनमें सबका नाम सीधा नहीं है, उनके
कुछ और कैरेक्टर से नाम है के भार्गव, भृगुवंशी, सोनक, कौशावरेर, मैत्रेय, ये कौशावर गोत्र में आता है तो इसलिए कौशावर मैत्रेय, और क्षत्रा विदुर। अब क्यों कहते हैं इनको विदुर को, मैं कभी पढ़ा था, मुझे याद नहीं है क्षत्रा क्यों कहते हैं। जैसे कोई तो कहते हैं भाई जैसे छाते में हनी होती है, ऐसे धर्मराज विदुर के अंदर सारा धर्म भरा हुआ था, वो छत्ता था। हाँ, छत्ता जैसे कहते हैं ना, छत्ता ही है ना, छत्ता। एक भाव ये, और कोई भाव ढूंढ के निकालना। ये सब ऐसे क्यों कहे हैं, ये श्रील प्रभुपाद लिखते हैं। The phrase Suta Uvacha, Suta Goswami said, appear to indicate a break in the discourse between the Maharaj Parikshit and Sukdev Goswami. When Sukdev Goswami was speaking, Maharaj Parikshit, Suta was also member at that time. And Suta was only there present, hearing. But Suta Goswami was speaking to the sages of Naimisharanya, headed by the sage Sonak, the descendant of the Sukdev Goswami, a descendant of ये क्या लिखा है? The head of the sages Sonak, a descendant of Sukdev, कैसे लिखा है? He also heard from Sukdev Goswami. Okay. This, however, does not make any substantial difference. चक्रवर्ती पाद दो बातें लिखते हैं. Addressing Sonak as a Bhrigu suggests that he is capable of understanding the knowledge. Kept in the heart means he did not forget the question. So Maitreya still remember the question. Now the next creation. Brahma create 14 words. How? Maitreya Vacha. एक और नाम ब्रह्मा का आ रहा है जो हमारी सिबू का लिस्ट में न था, मॉर्निंग लिस्ट में नहीं था. व्रंचोपि तथा चक्रे एव्यं वर्ष शतम तपः आत्मने आत्मानम् आवेश्य यथा अथ भगवान अजः. So read please translation. The greatly learned sage Maitreya said, O Vidur, Brahma thus engaged himself in penance for 100 celestial years, as advised by the personality of Godhead, and applied himself in devotional service to the Lord. ये पहला श्लोक है, भगवान ने कहा. सेकंड 30 श्लोक है. वर्ष 30 में भगवान ने क्या कहा? तपस्या, डू ऑस्टेरिटी एंड मेडिटेट ऑन मी. ये भगवान ने आदेश दिया तो ब्रह्मा ने उसको फॉलो किया. ओके, श्रील प्रभुपाद's purport. Brahma engaged himself for personality of God. Godhead Narayan means he engaged himself in service of Narayan. That is the highest penance one can perform for any number of years. There is no retirement from such service, which is eternal and ever encouraging. But so Brahma continues his devotional service, first austerities, and then what he saw? He engaged his mind in Narayan. Next verse. Tada viloka bhaja sambhuto vayunam tada adhishtitah padmam ambhascha tata kala krita viryena kampitam. Next translation. Thereafter Brahma saw that both the lotus on which he was situated and the water on which the lotus was growing were trembling due to the strong, violent wind. It means same time of devastation, same wind was there. So Prabhupada's purpose is very good for personal application. The material world is called illusory because it is the place of forgetfulness of the transcendental service of the Lord. Thus,
one engaged in the Lord's devotional service in the material world may sometimes be very much disturbed by awkward circumstances. So in this material world, when we preach, always there are awkward situations. There are challenges. Prabhupada says, there is a declaration of war between the two parties, the illusory energy and the living entities. And the devotees. And sometimes the weak devotee fall victim to the onslaught of the powerful illusory energy. Lord Brahma, however, was sufficiently strong by the causeless mercy of Lord, and he could not be victimized by material energy, although it gave him cause for anxiety when it managed to totter the existence of his position. अपने घर ही हिल रहा था, ब्रह्मा जी का कमल ही हिल रहा था, तो बेचारा क्या करता? सृष्टि तो बाद में, पहले अपना घर बचाना था। तो ऐसी हमारी स्थिति होती है कि हम जाते हैं प्रचार करने, हम आप खुद ही हिल जाते हैं। दूसरे लोगों का देखकर ऑप्युलेंस हिल जाते हैं। इसलिए प्रभुपाद देयर इज अ वार, सो until unless somebody is not strong, he may fall down. चक्रवर्ती पाद ने क्या लिखा है? कुछ नहीं लिखा है। नेक्स्ट वर्स। तपस्या हेध्यमानेन विद्या चात्मसंस्थया विवर्धा विज्ञान बलो नयपादवायुं सहाम्बसा। पढ़िए। Long penances and transcendental knowledge of self-realization had matured Brahma in practical knowledge, and thus he drank the wine completely, along with the water. So long penance मतलब कम से कम 30-40 साल तक जप करोगे अच्छी तरह से, long penance. And transcendental knowledge which you hear now, when you realize, then you will mature. When Brahma matures, so we will be mature in practical knowledge. It means then we can practically apply that knowledge. And in this way, the difficulties which are in our preaching will be stopped. So it's not easy. Always there are challenges. Therefore, the two things which are necessary is transcendental knowledge and tapasya. And tapasya for us is chanting Hare Krishna, and transcendental knowledge for us is studying scripture. So these two things will help us to mature in due course of time with a realized knowledge to be victorious in our war against Maya. And all the obstacles can be easily overcome. Is it okay? Next. Prabhupada writes, there are sometimes people, sages, they conquered also, still they fall down. So this is the war is continuous. See that examples, sadhakas, of course. Falling down is not a problem, it is natural. But not getting up and starting is a foolishness. To fall down is natural. Because we are already fallen down. But not to continue further is a laziness. Huh? Bounce back. When you fall back, bounce back. Okay? You fall down, bounce back. Okay? भाई पानी में नाव है तो हिलेगी तो जरूर, बिना हिलने के तो नहीं चल सकती। तो हम दुनिया में हैं तो हिलेंगे जरूर। It's not possible we can be. स्मूथ जर्नी हो नहीं सकती। ईसीजी जो होती है ना, वो ऊपर नीचे ऐसे चलती है, तो आदमी जिंदा होता है तब ऐसे चलती है, सीधी चलती है तब मर जाता है। तो सीधा कभी डिवोशनल सर्विस में स्मूथ पाथ नहीं है,
कभी ऊपर कभी नीचे है, घन तरला है। Prabhupada continuing the same purport. Lord Brahma's struggle for existence is personal example of continual fight between the living entity and material world and the illusory energy called Maya. Beginning from Brahma down to this age, living entities are struggling with the forces of material nature. By advanced knowledge in the science and transcendental realization, one can try to control the material energy which works against our endeavors, and in the modern age, advanced material scientific knowledge and penance have played a very wonderful role in controlling the power of material energy. Such control of material energy, however, can be most successfully carried out if one is soul surrender unto the Supreme Personality of Godhead and carries out his order in the spirit of loving transcendence. क्या लिखा प्रभुपाद ने, कुछ समझ में आया? मॉडर्न साइंस बहुत अच्छा कंट्रोल कर लिया है मटेरियल एनर्जी के ऊपर। फ्लाइट में जा रहे हैं, धरती के नीचे जा रहे हैं, लेकिन इससे आसान तरीका क्या है? ये प्रभुपाद जब लिख रहे हैं तो क्या सोचते हुए लिख रहे हैं? ये माम प्रपद्यन्ति मायाम एतांतरन्ति ते देवी एष गुणमयी मम माया दुर्तया ये माम प्रपद्यन्ते, ये लिख रहे हैं ये माम प्रपद्यन्ते, जो मेरा शरण लेता है माया में तर, उनके लिए माया कुछ भी नहीं, उनको माया को वश में करने की आवश्यकता नहीं है। दे विल बी सक्सेसफुल विदाउट डाउट। Surrendered to Krishna in our sense. Some people comment that you are using the products of them and you are trying to progress in Krishna consciousness. What about them? ब्रह्मा जी की नासिका से वारादेव निकला था, ब्रह्मा जी धरती नहीं लाया, वारादेव लेके आ गया नहीं। इसका मतलब बनाने वाला ब्रह्मा की तरह है, लेकिन हम वारादेव की कृपा से आगे बढ़ रहे हैं। तो भगवान का शरण लेंगे तो आगे काम बढ़ जाएगा। पैदा करने वाला जरूरी नहीं है कि बुद्धिमान हो, नहीं। ब्रह्मा जी नहीं ला पाया भाई, पृथ्वी में ब्रह्मा तो नहीं लाया, वारादेव ही लाया ना। ब्रह्मा देव ने वारादेव को पैदा तो करके दिखाया, लेकिन पृथ्वी तो नहीं ला सका स्वयं। तो ये बेचारे साइंटिस्ट बना लेते हैं सामान, लेकिन इससे भगवान नहीं ढूंढ पाते, क्योंकि वो उनका विजन मटेरियल होता है। हमने ये मटेरियल चीज़ें स्पिरिचुअल पर्पस के लिए यूज़ करते हैं। तो एवरीथिंग कैन बी यूज इन द सर्विस ऑफ गॉड। प्रभुपाद ने डिक्ट्रोफोन का एग्जाम्पल दिया है या फ्लाइट का एग्जाम्पल दिया है। और इसका अच्छा है कि साइंटिस्ट हैव गिवन अस गुड फैसिलिटी फॉर हेल्पिंग अस इन प्रैक्टिसिंग कृष्णा कॉन्शियसनेस। सो उसको थोड़ी सुकृति मिल जाएगी, दे विल गेट सम सुकृति एटलीस्ट, नहीं। अब यहां लिखा है Brahma, who was situated on the lotus, saw that lotus and the water was trembling in the wind. Trembling. This verse is connected with the following verse. आगे आएगी उसको। The wind had power from the period of devastation. Kal Krita Viryena. This means that wind and water had the same power as during devastation, when their power had increased. अब क्या कर रहा है ब्रह्मा? तदा विलोक्य व्यद्व्यापी पुष्करम यदाधिष्ठितम् अनेन लोकान् प्रागलीनान् कल्पितास्मित्या अचिन्तयत्
Thereafter he saw that the lotus on which he was situated was spread throughout the universe. कितना बड़ा था वो लोटस, जितनी ये दुनिया है इतना बड़ा. कभी कभी लोग कहते हैं कुंभ मेले में जाते हैं, 1 ड्रॉप गिरा था अमृत का. कितना ड्रॉप होगा जो कलश से गिरा होगा देवताओं के. हमारे दिमाग में ड्रॉप होता है छोटा सा गिरता है उतना, वो 1 किलोमीटर से बड़ा ड्रॉप था जी. नहीं, यस, 1 किलोमीटर से ज्यादा जगह में सब लोग स्नान करते हैं. तो ये कितना बड़ा था, कमल कितना बड़ा था, जितनी ये बड़ी दुनिया है इतना बड़ा था. तो जिसके नाभि से कमल निकला है वो कितना बड़ा होगा. हाँ, तो जो साइंटिस्ट जिसने ये चमत्कार बनाए उसका दिमाग बनाने वाला कितना बड़ा होगा. भाई उसका दिमाग किसने बनाया, वो उससे बड़ा होगा ना. तो हम तो साइंटिस्ट को देख के भी उसके दिमाग बनाने वाले को देखते हैं. तो उसने कितना कमाल कर दिया, चमत्कार दिखा दिया. सो क्या होगा. तो ये जो हर साल कुंभ मेले में होते हैं मतलब इतना बड़ा बूंद गिरता है. गिरता नहीं है, पहले गिरा था, अभी लोग जाके गिरते हैं. अब लोग गिरते हैं, पहले अमृत गिरा था. ऐसे कहते हैं कि वो जब ग्रह नक्षत्र वैसे ही बनते हैं तो अमृत वहां प्रकट होता है पुनः. जो गिरा था फिर से प्रकट होता है. लेकिन प्रभुपाद जी कहते हैं वो अमृत वासल में नाम अमृत है, भक्ति रसामृत है, वही तो दिया है. चैतन्य महाप्रभु ने वही रसामृत दिया कि अमृत वास्तव में ये है. सो thereafter he saw the lotus on which he was situated was spread throughout the universe, and he contemplated how to create all the planets which were previously merged in that very same lotus. Prabhupada लिखते हैं, the seed of all planets in the universe were impregnated in the lotus on which Brahma was situated. एक आदमी था, भीख मांग रहा था कहीं, बड़ी अच्छी पेटी पे बैठा था. तो लोग 1-2 रुपया दे के जाते थे. किसी ने कहा तो भीख क्यों मांगता है, जिस पेटी के ऊपर बैठा है वो पेटी पुरानी एंटिक्स की है, कार्विंग की हुई है, लाख रुपए की तो पेटी है, तुम इसके ऊपर रुपया क्यों मांग रहे. कभी खोल के देखा इसमें क्या है. बोला नहीं. बोला खोलो. ताला तोड़ा, अंदर देखा हीरे मोती माणक पड़े थे. तो ब्रह्मा जी जिस कमल पे बैठा था उसी में सारा ब्रह्मांड था, लेकिन उसको दिखाई नहीं दे रहा था. इसी को माइजर कहा है, जो पहले माइजर कहा है ना. तो माइजर भिखारी बैठा पेटी के ऊपर है और रोज भीख मांग रहा है, अंदर क्या है पता नहीं. ये पोजीशन हम सब की है. भगवान का प्रेम हमारे अंदर पड़ा है, लेकिन हम उसका पता नहीं है, इसलिए दुनिया में इधर उधर सुख के लिए भटक रहे. सुख का सागर अंदर पड़ा है. All the planets were already generated by the Lord, and all the living entities were also born in the Brahma. Living entities are born in the Brahma. इसको प्रभुपाद जी ने कैसे यूज किया. कितने मंदिर है आपके, सैकड़ों. कहाँ है. टाइम इज सेपरेटिंग. चैतन्य महाप्रभु ने पहले बना के रखी है. सेम वे यू थिंक. महाप्रभु ने कहा है सब जगह प्रचार होगा तो होगा, तैयार हो गया है. हमको मालूम नहीं है, हमको जाके पहुंचना है तो मिल जाएगा. The material world and the living entities were all already generated in seedling form by the Supreme Personality of Godhead, and Brahma was to disseminate the same seedling all over the world, universe. The real creation therefore is called Sarga. Later on, the manifestation by Brahma is called he saw the lotus spread out up to Satyalok, means out, throughout. अब ब्रह्मा जी क्या कर रहे हैं देखिए, 8वां श्लोक. पद्मकोशं तदाविश्य भगवत्करं चोदितः एकं
विभानिक्षेद ऊर्ध्वा त्रिधा भाव्यं द्विसप्तधा। द्विसप्तधा का मतलब 2 into 7 14. So thus engaged in the service of the Supreme Personality of Godhead, Lord Brahma entered into the world of the lotus and is spread all over the universe. He divided it into 3 divisions of the world and later into the 14. पहले 3 फिर 14 क्यों किए? चक्रवर्ती पाद लिखते हैं, He entered into the lotus fixed in creation of the planet for the Lord, by the Lord. He divided the one lotus into 3 parts in order to negate the idea that it is impossible to create 3 worlds out of one. It is explained that the expansion was even greater. Brahma made into 14 divisions, since to make it suitable, bhavyam, for many forms, 3 divisions were not sufficient. This is Sridhar Swami's explanation. First he divided the lotus into 3, then into 14, and then even more with planets like sun and moon. How is it described? It was suitable for meditation, bhavyam. ये तो 14 लोग की मेडिटेशन करते हैं ना, दूसरे स्कंद में है ना, पहले अध्याय में पाताल लोग भगवान के चरण हैं, वो बात करें कैसे क्रिएशन कैसे की, फॉर सुइटेबल फॉर मेडिटेशन ऑफ द वर्शिप पर ऑफ द व्राज, वैराज। वैराज किसको कहते हैं? हाँ, वैराज ब्रह्मा को भी कहते हैं, वैराज गर्भोदक्षाय विष्णु का क्रिएशन के समय उसको भी कहते हैं, वैराज ब्रह्मा को भी कहीं कहीं कहा हुआ है। वर्शिपर ऑफ वैराज, वैराज और कहीं देखना है इसका अर्थ, ये लास्ट वर्स ऑफ दिस सेक्शन। हाँ, ब्रह्मा जी का वर्शिपर्स है, वैराज वर्शिपर्स ऑफ ब्रह्मा। वर्शिपर ब्रह्मा की तो आसान बात है समझाना कि हम सब वर्शिप कर ब्रह्मा के फॉलोअर है, उसकी परंपरा का, इट इज नॉट डिफिकल्ट। वैराज का अर्थ जो है वो गर्भोदक्षाय विष्णु को भी वैराज कहते हैं, जिसके अंदर सारे जीव और ब्रह्मांड समाये होते हैं। तो गर्भोदक्षाय विष्णु ही विराट पुरुष है, जो विराट पुरुष है वो गर्भोदक्षाय विष्णु है और वही विराज है। और उसी के ध्यान करना कैसे है, उसका ध्यान कैसे करना है कि आदमी बैठे बैठे कुर्सी पे सो ना जाए, ध्यान करना है, भाई सो गया तो पाताल लोक में रह जाएगा, और आधा सोया तो पृथ्वी लोक तक पहुंचेगा, जागता रहा तो सत्य लोक तक पहुंच जाएगा। तो ये भगवान का चरण से लेकर सारा वो उस हिसाब से बनाया, जस्ट फॉर दी मेडिटेशन। लास्ट वर्स ऑफ दिस ब्रह्मा's creation of 14 words. एतावान् जीवलोकस्य संस्था भेदः समाहृतः धर्मस्य हि अनिमितस्य विपाकः परमेष्टि असौ। Lord Brahma is the most exalted personality in the universe because of his causeless devotional service unto the Lord and mature transcendental knowledge. He therefore created all the 14 planetary divisions for inhabitants by the different type of living entities. पढ़िए इस प्रभुपाद का पढ़ पढ़िए। The Supreme Lord is the reservoir of all qualities of the living entities. The conditioned souls in the material world reflect only part of those activities, those qualities, and therefore they are sometimes called pratibhimbas. These pratibhimba living entities, as part and parcel of the Supreme Lord, have inherited different proportions of his original qualities, and in terms of the inheritance of these qualities, they appear as different species of life and are accommodated in different planets according to the plan of Brahma. अब अभी सुनो कुछ क्या लिखा है, कुछ समझ में आया? प्रतिबिंब क्या है, किस कंसेप्ट, प्रतिबिंब किस बात का कह रहे हैं?
प्रतिबिंब का मतलब रिफ्लेक्शन। भगवान का प्रतिबिंब। किस चीज का? भगवान की प्रतिबिंब, गुणों का। तो कितने गुण भगवान के जीव में प्रतिबिंबित होते हैं? 50%। और बहुत कम मात्रा में होते हैं। और वो जितनी मात्रा में जिसमें ज्यादा है वो देवता हो गए, उसमें 50% कुछ कम मात्रा में वो मानव हो गए, और उससे कम मात्रा में वो नीचे की जुड़ी में चले गए। ठीक है, तो ये कौन से गुण हैं? वो 50 गुण, जिसको हम 78% कहते हैं डिविजन्स में, और उनसे 5% ज्यादा देवताओं में वही गुण है ज्यादा, उनसे 5 ज्यादा हैं शंकर में। तो इसका मतलब शंकर के लिए अलग लोक बनेगा, वो ब्रह्मा नहीं बना पाएगा। तो उनसे गुण ही ऊपर है ना, उससे ऊपर फिर नारायण का है, वो तो स्पिरिचुअल वर्ल्ड में। तो ये गुण उनकी बात हो रही है। ठीक है, आगे पढ़िए। Brahma is the creator of 3 worlds, namely the lower planets called the Patal Lokas, the middle planets called the Good Lokas, and the upper planets called the Swarlokas. Still, higher planets such as Mahaloka, Tapoloka, Satyaloka, and Brahmaloka do not dissolve in the devastating water. ये देखो, सत्यलोक और ब्रह्मलोक एक है, 2 है? एक ही है। तो एक कौन सा कम पड़ रहा है यहाँ? महलोक, तपलोक, जनलोक, सत्यलोक। जनलोक नहीं लिखा हुआ है, ये टाइपिंग की मिस्टेक है। जो डॉक्यूमेंट बनाए वो देखो किताब में क्या लिखा है। तो ब्रह्म और सत्य तो एक ही है ना, 2 नहीं हो सकते। तो ये टाइपिंग मिस्टेक है। भागवत के अंदर ऐसे मिल जाते हैं टाइपिंग मिस्टेक, एडिटिंग मिस्टेक मिलती है। This is because of the causeless devotional service rendered unto the Lord by the inhabitants, whose existence continues up to the end of Dviparal. द्विप्रारद मतलब 100 साल ब्रह्मा के। इसका अर्थ क्या हुआ? इसका अर्थ ये हुआ कि 3 लोग उसको कहते हैं जो ब्रह्मा जी के रात के समय जिनमें प्रलय हो जाती है। वो है नीचे के लोक, भूलोक और स्वर्गलोक। भूर भुव स्व, ये तो प्रलय हो जाएगी। इससे ऊपर जनलोक, तपलोक, महलोक, सत्यलोक है, वो ब्रह्मा जी की रात में प्रलय नहीं होती। वो ब्रह्मा जी के 100 साल तक रहते हैं। ठीक है, ये बात यहाँ कही गई है। जनरली स्वर्गलोक we divide all these lokas only, no? ब्रह्मलोक, जनलोक, तपोलोक, they comes in the ये स्वर्ग में नहीं है। स्वर्ग है भूर भुव स्व। भू में हम रहते हैं, भुव में गंधर्व ये आदि रहते हैं जो थोड़े छोटे देवता हैं, और स्वर्ग में इंद्र रहते हैं। आगे वाले लोग हैं उनको कहते हैं, उधर सब ब्रह्मचारी रहते हैं, ऊर्ध्वरेता रहते हैं। ज्यादातर जो ऋषि रहते हैं वहाँ तपस्वी रहते हैं, वहाँ कोई बीमारी नहीं है, कोई बुढ़ापा नहीं है। उनको एक ही चिंता है कि दुनिया वाले दुखी क्यों हैं, इनको सुखी कैसे किया जाए। दे हैव नो अदर एंग्जाइटी एक्सेप्ट टू सी द सफरिंग ऑफ द ह्यूमन बीइंग ऑन द अर्थली प्लैनेट। दे हैव नो अदर एंग्जाइटी। और वहाँ जो रहते हैं ना, उनको फिर सप्तऋषि करके चुना जाता है, कभी एक मनवंतर में, दूसरे में। दे अगेन कम फ्रॉम देयर, वहाँ वो रिजर्व में रहते हैं। They are more pious people, not exactly pure devotee of Lord. जैसे हमने पढ़ा, देवता भी भगवान के डिवोटी है पर सकाम है। तो ये सकाम भी नहीं है, ये निष्काम है। They have chance to go back from that place only, or they need to come back to Sometime they go along with Brahma to the spiritual world, along with Brahma. If they are completely purified in their consciousness, sometime they may come back. दोनों वर्जन लिखे हुए हैं कि ब्रह्मा के 100 साल पूरे होते हैं, ब्रह्मा के साथ वो भी भगवत धाम चले जाते हैं, ऐसे भी लिखा है। और ऐसे भी लिखा है कि नहीं, ये सब भौतिक जगत है, तो दोबारा जब ब्रह्मा दूसरा चुना जाएगा, या ब्रह्मा कभी इसके लिए, when sometime there is no person for taking post of Brahma, then Supreme Lord act as a Brahma,
In that time, all those people, because of association of Brahma, they will go when the Brahma's 100 years are over. But normally when the living entity is Brahma, sometimes they go, sometimes they may not go. So there are both versions are there. So these three lokas are there, Patalok, Bhurlok, Swarlok. They created by Brahmaji and other four नीचे वाले ऊपर वाले 100 साल ब्रह्मा के 100 साल के बाद प्रलय, इसको आगे आएगा 3 प्रकार की प्रलय होंगी, 3 प्रकार की 4 प्रकार की प्रलय, 4 टाइम, लेट्स से निरोध मीन्स एनालिएशन ऑफ 3 टाइप्स, यहाँ 3 टाइप्स लिखी हुई है, वो मैं समझता हूँ काल में आएगी कल। तो वो भी ब्रह्माजी ने क्रिएट किया है पहले, ब्रह्माजी क्रिएट करते हैं उसको पहले, किसको? जो ऊपर के 4 हाँ, क्रिएट ब्रह्मा ने किए। कब? अभी तो 14 लोग उसी ने ब्रह्मा ने किया ना। नाउ ब्रह्मा इज क्रिएटेड आर 14 planets. They are already existing there, but Brahma has manifested them according to the qualities they have reflected of the Supreme Lord. They are situated in different planets. The production of particular places, samishtaha bheda, suitable for the particular individual bodies and the parts of the universal forms are and parts of the universal form. Parts of the universal form माने जो universal form में भी सबका अपना अपना स्थान है. Was entrusted to Brahma because Brahma was mature in meditation and worship using mantra dharmasya without material desire animittasya. What is possible with the strength of such meditation? What is impossible with this? There is nothing impossible. Now next section. Characteristic of time 11, 12 and 13, 3 verses. Maitreya had spoken about time several times previously in 3:18:12, 3:8:13, 3:8:22, 3:10:5. Abhi. Therefore, Vidur now asks more about time. Huh? Again is asking. Vidur is asking. Yathath bahu rupasya harera adbhuta karmanaha kalaksham lo lakshanam brahman yatha varnya naha prabho. Vidur inquired from Maitreya, O my Lord, O greatly learned sage, kindly describe eternal time, which is another form of Supreme Lord. The wonderful actor, Supreme Lord is wonderful actor. What are the symptoms of eternal time? Please describe them to us in detail. Srila Prabhupada writes, complete universe is manifestation of varieties of entities beginning from atom up to the gigantic universe itself. अब प्रभुपाद जी देश की बात कर रहे हैं, देश की बात कर रहे हैं, ये आइटम से यूनिवर्स तक ये देश हो गया. And in the end all is under the control of Supreme Lord in the form of Kal. सो देश और काल दोनों की बात हो रही है. ये आप देश और काल दिमाग में बिठा के रखिए. काल की गणना देश से होती है. इधर देश मतलब प्लेस, देश मतलब प्लेस, देश और काल कहते हैं ना. अब काल की गणना कैसे करें? देश के आधार पे. भाई दिन रात, ये काल की गणना कैसे करेंगे? दिन रात से. तो दिन रात तो देश हो गया ना. किसी कहाँ रात होती है, कहाँ दिन होता है. तो देश और काल दोनों का शब्द लिखा हुआ है. ये दिमाग में रखना, क्योंकि नेक्स्ट चैप्टर में पहले देश की बात करेंगे, अणु क्या है, परमाणु क्या है, फिर कहेंगे 6 परमाणु जहाँ से गुजरते हैं, दिखते हैं, उसको टाइम का पहला, दैट इज द स्मॉलेस्ट टाइम, त्रिशाणु है वो. तो ये लैंग्वेज जो है ना, इस लैंग्वेज को समझिए.
The complete universe is manifestation of varieties of entities, beginning from the atom to the gigantic universe itself. ये है काल, ये time, and it is under the control of काल. The controlling time has different dimension in relation to particular physical commodity embodiment. There is a time for atomic dissolution and there is a time for universal dissolution. इसका मतलब क्या हुआ? एक अब यहाँ एक प्रलय आप सुन के चलिए, 4 प्रकार की प्रलय के नाम आते हैं किसी को? नित्य प्रलय, नैमित्तिक प्रलय, आत्यंतिक प्रलय, और चौथी आंशिक नहीं है नाम, आंशिक हो सकता है लेकिन महाप्रलय है। नित्य, नैतिक, नैमित्तिक, महाप्रलय और आत्यंतिक प्रलय। नित्य प्रलय रोज होती है। एक आदमी का जीवन भी समाप्त होता है, वो भी उसके लिए प्रलय है। रात को सो जाते हैं, वो भी प्रलय है, सब कुछ भूल जाते हैं। ये है नित्य प्रलय, रोज हो रही है। नैमित्तिक है जब ब्रह्मा सो जाता है। आसान समझना है तो ऐसे समझिए, जब हम सो जाते हैं हमारी नित्य प्रलय हो जाती है रोज। जब ब्रह्मा सो जाता है तो नैमित्तिक प्रलय हो जाती है, और जब ब्रह्मा के 100 साल पूरे होते हैं तो महाप्रलय होती है, और जब हम मुक्त होकर भगवान के धाम जाते हैं तो आत्यंतिक प्रलय होती है। फिर हमारा कोई वजूद नहीं रहता। सो दीज आर द 4 टाइप्स ऑफ एनहाइलेशंस। अब यहाँ प्रभुपाद लिख रहे काल से इसकी गणना होगी। काल से कैसे गणना होगी? ब्रह्मा जी के एक दिन में 1000 बार 4 युग बदलेंगे, तब जाके ब्रह्मा जी की नैमित्तिक प्रलय होगी। ब्रह्मा जी के 100 साल गुजरेंगे तब ब्रह्मा जी की महाप्रलय होगी। तो टाइम से होगी ना, देश की प्रलय काल से होगी। तो इसलिए दोनों की बात की है। देयर इज अ टाइम फॉर द एनहाइलेशन, ओके। Also growth, development and resultant actions are all dependent on the time factor. जन्म लिया एक टाइम, बड़े हुए दूसरा टाइम, शादी हुई तीसरा टाइम, बूढ़े हुए चौथा टाइम, मरे 5वां टाइम। ये सब टाइम से होगा ना। ये हमारा भी टाइम से चल रहा है ना, ये सारा जीवन टाइम से ही चल रहा है। तो इसमें चेंज जो आती है, 6 चेंजेस, वो टाइम से। काल का काम है जिसका जन्म लिया है उसको नाश करना। ये काल का काम है विशेष रूप से। और एक और काल का काम है, अभी आप पढ़ेंगे। ये टेबल जब से बनी है तब से इसमें सिर्फ 3 चेंज होगी। बनी है, कुछ समय रहेगी, फिर टूट जाएगी। लेकिन हम 6 चेंजेस के अंडर क्यों? क्योंकि हम एम्बॉडेड सोल हैं, हमारे अंदर आत्मा है, इसलिए 6 चेंज। ये टेबल दूसरा टेबल पैदा नहीं कर सकता, लेकिन हम कर सकते हैं। तो एम्बॉडेड मैटर में 6 चेंजेस होती है, और ओनली मैटर में ओनली 3 चेंजेस। ठीक है। टाइम हैज बीन मेंशन्ड इन मेनी प्लेसेस सच एज कालाहयत्ता साधित कर्म तंत्रो 3:8-12 आप पढ़ के आए हैं। गुणेन काल अनुगतेन विदुः 3:8-13 ये आप पढ़ के आए। कालेन यो अज्ञ पुरुषाश 3:8-22 एन तद काल कृतः वीर्येण कंपितम, ये आज पढ़ा हमने। Having forgotten that the Lord's effort, creation and destruction are accomplished by time, we will now ask about time. Please exactly describe time that you had mentioned. अर्थ अब काल की बात। मैत्रेय वाचा गुण व्यक्ति कारा करो, निर्विशेषो अप्रतिष्ठिता, पुरुषस्तदुपादानम् आत्मानं लीलया सृजा। मैत्रेय क्या कहते हैं?
गुण व्यक्तिकार आकारो, गुणों में हलचल पैदा करता है काल। पहला काम क्या करता है काल? प्रकृति के सब गुण समान हो इस अवस्था में होते, इक्विलिब्रियम में होती, काल उसको एजिटेट करता है, क्षोभायमान करता है, उसको कहते व्यतिकर। आकारों का मतलब क्या होना चाहिए? आकार, प्रभुपाद लिखा सोर्स। वैसे आकार का अर्थ रूप भी होता है। और फिर लिखा है निर्विशेष हो, काल निर्विशेष है, काल में कोई विशेषता नहीं है, होमोजीनियस है, इम्पर्सनल है। काल इज इम्पर्सनल एस्पेक्ट ऑफ सुप्रीम लॉर्ड। काल निर्विशेष है। और प्रतिष्ठित, अप्रतिष्ठित, अप्रतिष्ठित है, निर्विशेष, विदाउट डाइवर्सिटी, अप्रतिष्ठित, अनलिमिटेड, एक जगह नहीं है। कहां से गिनती करो, कहीं नहीं कर सकते हो। पुरुषस्तद उपादानम, भगवान तत् उपादानम, ये भगवान का इंस्ट्रूमेंट है, उपादान है जिसके द्वारा भगवान कार्य करते हैं। आत्मानम लीला सृजेत, और भगवान इसके द्वारा सृष्टि की लीला का कार्य करते हैं। Maitreya said, eternal time is the primal source of interaction of the three modes of material nature. ये तो सबको याद है ना? प्रधान, three modes are in equilibrium. महत तत्व, पहले क्या उसमें? The glance of the Supreme Lord, Garbhodakshaya Vishnu. Then Kal, and then Jiva enters along with the glance. Jiva with glance and Kal agitate the equilibrium of the gunas, and the creation starts. So ये पहला काम है काल का. It is unchangeable. Kal is unchangeable and limitless, is unlimited, and it works as an instrument of Supreme Personality guarded for its pastime in the material creation. Maitreya said, time whose true nature is unknown through the interaction of guna, akaro, बता नहीं सकते क्या काल, is without particulars, attributes, and has no beginning or end. The Supreme Lord created the universe, which has time as its efficient cause, as a pastime, efficient cause as a pastime. Efficient cause के साथ दूसरा cause क्या होता है? Efficient cause and material cause. Generally कहते हैं efficient cause and material cause. या क्या कहते हैं? Efficient cause and उपादान कारण and निमित्त कारण. निमित्त is efficient and उपादान is material. इसका मतलब उपादान कारण क्या है सृष्टि का? प्रधान, महत तत्व. निमित्त कारण क्या है? काल. काल is निमित्त कारण or efficient cause for the pastime. Srila Prabhupada writes, important time factor is the background of material manifestation as the instrument of Supreme Lord. Background, एक example दिया जाएगा. It is the ingredient of assistance offered to the material nature in the form of efficient cause. Assess the material nature for creation as a pastime. No one knows where time begins and where it ends, and it is the time only which can keep a record of creation, maintenance, and destruction of the material man. This time factor is a material cause of creation and is therefore self-expansion of personality of Godhead. This time is considered the impersonal feature of Supreme Lord. So time का काम क्या है? अब time factor is also explained by the modern man in the various ways.
Some accept it almost as it is explained in Srimad Bhagvatam. For example, Hebrew literature. Time is accepted as same spirit as representation of God. It is stated therein, God who at sundry times and in diverse manners spake in time past unto the Father by the prophets. Metaphysically, time is distinguished as absolute and real. Absolute time is continuous and is unaffected by the speed of the slowness of material things. The time is astronomically and mathematically calculated in relation to the speed. Speed changes the life of a particular object. Factually, however, time has nothing to do with the relativity of things. Rather, everything is shaped and calculated in terms of the facility offered by time. Time is the basic measurement of the activity of our senses, by which we calculate past, present and future. But in factual calculation, time has no beginning, no end. Chanakya Pandit says even a slight fraction of time cannot be purchased with millions of dollars. And therefore even a moment of time lost without profit must be calculated as greatest loss in life. Time is not subject to any form of psychology, nor are the moments objective realities in themselves, but they are dependent on the particular experiences. Therefore, Srila Juhu Goswami conclude that time factor is intermixed with activities, actions and reactions. इसका मतलब क्या? Time factor is intermixed with activities, actions and reactions. Activity, action, both are same. Action and reaction. How can you understand this language? Action, then reaction will come after some time. कैसे इसको एक्शन रिएक्शन क्यों लिखा है? एक्शन रिएक्शन लिखें तो क्या समझना चाहिए? Action is karma, reaction is the result of the karma. तो प्रारब्ध कर्म और प्रारब्ध कर्म काउंट कैसे करेंगे? टाइम से. पता नहीं कब का कर्म है, उसका फल अभी आ रहा है. So this is what reaction, action and in the material energy. Material energy मतलब ये शरीर हमारा जो बना हुआ है, ये material energy बना हुआ है. इससे एक्शन जो करेंगे उसका रिएक्शन है. ये सब टाइम से कैलकुलेट हुआ. टाइम इज अ गवर्निंग फैक्टर. So Chakravarti Pad is right. Time, knowledge of whose nature akara arises from transformation of guna into mahatattva and other elements, is without specific qualities and without beginning and end, nirvishesha and apratishthit. By its cause, creation and destruction take place. Upadanam means what is accepted as a cause from the verb upada, receive. The Lord created the universe, which is called himself, Atmanam, since it is the result of his Shakti, in which time act as the efficient cause, tad upadanam. So यहाँ टाइम के हमने कौन से करेक्टर पढ़े? और को छोड़ो, सिंपल कुछ करेक्टर्स याद करो. कौन से? Time is known by its instrumental function in creation by agitating the gunas. Number one. Number two, Can you repeat that again? time is instrumental.
instrumental in agitating the equilibrium of the guna in the process of creation of material nature, material universe. So pradhan to महत तत्व, this transformation is by time. प्रधान से महत तत्व तक लाने का काम टाइम का है. उससे पता लगता है कि टाइम काम कर रहा है. दूसरा, निर्विशेष. Time has no variety, homogeneous. Number 3, apratishta. It has no beginning, no end. And number 4, it is the efficient cause of creation as a pastime of Supreme Lord. Efficient cause of material creation is pastime of Lord. Leelaya. ये 4 चीजें इस श्लोक में हैं. ये 4 चीजें हैं. अब आगे कहा, विश्वं वैब्रं तन्मात्रं संस्थितं विष्णुमायया ईश्वरेण परिच्छिन्नं कालेन अव्यक्तमूर्तिना. This cosmic manifestation is separated from the Supreme Lord by marginal energy by means of काल. अब इस बात को समझिए, भगवान को भौतिक जगत से काल सेपरेट करता है. ये एक और काल का काम हो गया. इसके लिए प्रभुपाद के परपट में एक एग्जाम्पल है. वो एग्जाम्पल ये है, मैं अभी बोल रहा हूं, इसमें रिकॉर्ड हो रहा है ना. कल आप इसको कहीं और जाके चलाएंगे, मैं वहां नहीं रहूंगा, लेकिन मेरा आवाज आप सुन सकते हो ना. ऐसे जैसे टेप रिकॉर्ड के रील के अंदर बोलने वाले के आवाज को बोलने वाले से अलग किया जा सकता है ना, ऐसे काल टेप रिकॉर्ड की रील की तरह भगवान से भौतिक जगत को अलग करता है. ये है एनालॉजी इन दी परपट. इज इट ओके? अब पढ़िए. The cosmic manifestation separated from the supreme by marginal energy by means of Kal, which is unmanifested, impersonal feature of the Lord. It is situated in the objective manifestation of the Lord under the influence of the same material energy of Vishnu. The universe, which is firmly established by Maya of Vishnu, whose cause is the Lord, is divided into various planets, living beings by time, whose form is invisible, and which is a representative of Lord's power. मैं काल हूं, कभी सुना है? मैंने देखा है, यहाँ महाराष्ट्र में मैंने मराठों का साम्राज्य देखा है. मैंने ये टाइम ऐसे बोलता है ना कभी कि मैंने जो है मुगलों का साम्राज्य देखा है. तो ऐसे मैं काल हूं. ये काल का मतलब जो कुछ हुआ है सृष्टि में उस सब का साक्षी है. बता रहा है कुछ समय में क्या चीज हुई है. As stated previously by Narad before Vyasdev, 1.5.22, idam vi vishwam bhagavan ivare ivetaraha. This manifested world is the self same of personality of Godhead, but it appears to be something else beyond the or beside the Lord. It appears so because it's being separated from the Lord by means of Kal. It is something like the tape recorder voice of a person who is now separated from voice. As the tape recording is situated in the tape, so the whole cosmic manifestation is situated in the material energy.
and appears separate by means of Kal. The material manifestation is therefore the objective manifestation of Supreme Lord and exhibit his impersonal feature so much adored by impersonal philosophers. This verse explains the time divides of the universe. But the energy of the Lord Maya, this universe is established firmly. Its cause is the Lord. It is divided by time, a form of the Lord's influence. Divided means that it is divided variously, as described above. Its form is invisible. This explains the term without particular attributes in the previous verse, which means निर्विशेष. So काल का एक और फंक्शन कौन सा हो गया? It separates the Lord from the material energy, like the sound of a person is separated from the person by tape record, which contain the whole detail. ठीक है, ये काल के कुछ आपको कैरेक्टरिस्टिक. अब लास्ट वर्स ऑफ द काल. तथेदानीं तथाग्रे च पश्चादपि एतद् ईदृशम्. This cosmic manifestation is as it was now, as it is now. It was the same in the past and it will be continue in the same way in the future. Srila Prabhupada writes, there are systematic schedule for perpetual manifestation, maintenance and annihilation. इसका मतलब कब सृष्टि होगी, कितने समय पालन होगा, ये सब चतुर्युगी, ये सब अपने अपने टाइम से होगा. और ये टाइम क्या है? काल. भगवद गीता से भूतग्रामम एवं कृष्णम अवशम प्रकृतेरवशात 9वां अध्याय. कई प्रकृति के भूत सब प्राणी पैदा होते हैं, फिर प्रलय होती है, फिर पैदा होते हैं. 8वें में भी ऐसा है, 9वें में भी ऐसा है. दोनों में फर्क क्या है? 8th chapter is also युग सहस्रम पर्यंतम ब्रह्मणो तद्विदो. और 9th में भी है ये अभी जो हमने पढ़ा, भूत ग्रामम एवं कृष्णम अवसम प्रकृतेश वशात. दोनों में क्या अंतर है? What's different between the something about creation in 8th chapter and 9th chapter? 9th chapter is for devotees. 8th chapter is Brahma's creation. 9th chapter is Vishnu's creation. 8th chapter is Visarga, 9th chapter is Sarga. You're saying about Bhagavad Gita, brother? पढ़ के देखना, वो ब्रह्मा जी के एक दिन में 100,000 युग, फिर दोबारा ब्रह्मा सोता है, फिर जागता है, तो ब्रह्मा जी की सृष्टि हो गई ना. और यहाँ पढ़ना 9वें अध्याय में ब्रह्मा जी के 100 साल के बाद वहां लिखा है दोबारा सृष्टि होती है. तब सब जहां जीव सोए थे वहीं से जाग जाते हैं. तो ये दोनों में फर्क है. ठीक है, कभी सोचा नहीं होगा कभी, नहीं? चांस से आप 8th 9th बोल देता हूँ. भागवतम सोचो. हाँ? मैं भागवतम सोचो. As if created now and it will be destroyed later on, and so existed in the past, present. Yeah, ठीक है. Therefore, the systematic activities of time factor are perpetual, eternal, and cannot be stated to be false. Manifestation is temporary and occasional, but it is not false as claimed by Mayavadis. इस टाइम के लिए हमने कुछ पढ़ा है कल या परसों, पहले श्लोक में या दूसरे श्लोक में पढ़ा था. टाइम इज कॉन्स्पिक्यूअस बाय इट्स एब्सेंस. पढ़ा था ना. आध्यात्मिक जगत में टाइम है लेकिन प्रभाव नहीं. बुढ़ाई नहीं करेगा तो क्या करेगा? टाइम जैसा है ऐसा ही रहेगा. मारना काम है टाइम का, मरेगा ही नहीं कोई आध्यात्मिक जगत में. तो उधर उसका काम नहीं है कुछ भी है.
Because the universe has beginning and end, universe must be unreal. How can an unreal universe is divided? This cannot be said. This universe existed before the great devastation, agree. After the devastation is over, it will exist. It is not a false object, but is temporary. It exists in the stomach of Mahavishnu. Hmm? The lines of Vishnu Chakra, that means the universe exists in the stomach of. Yes. वो भगवान के उदर में रहता है. अब ए 10 टाइप ऑफ क्रिएशन दिख रहा है कि आपको पढ़ सकते हैं. In the spiritual world also time is there, but it is It has no influence. Which form? when Creation, the time, the 3 type of devastation. पहले क्रिएशन किसकी है देखो. 3 टाइप ऑफ काल, द्रव्य और गुण. हाँ, काल द्रव्य क्या? in the when Krishna performs Ras Leela, there is a moon comes. When he धरती के ऊपर गोलोक में the spiritual world. स्पिरिचुअल है. मून कहाँ जाएगा उधर? क्या न तो भाष्यते सूर्य न ऐसा को न पाओ, कहाँ से लाओगे उधर मून? है क्या उधर भाई? वो धरती की बात है नहीं. न तो भाष्यते सूर्य न शशांको न पाप नहीं. सीधी सी बात. उधर भाई प्रकाश अपने आप स्वयं प्रकाश है. धरती के ऊपर चंद्रमा उगता है तब ब्रह्मा जी के रात के बराबर भगवान ने रास लीला की. इसका मतलब 1000 युग 4 चतुर्युगियां बीत गई, पता भी नहीं लगा. सब समझे कि हमारे साथ सब बैठे हुए थे. टाइम रुक गया. भगवान के लिए टाइम रुक जाता है. जैसे भगवान ने जयद्रथ को मरवाने के लिए टाइम को रोक दिया था. जैसे भगवान ने वो श्रुतदेव ब्राह्मण के घर के गए और बहुलाशव के गए, टाइम को बदल दिया, 1 महीना 1 दिन. तो ऐसे भगवान के बस में टाइम है. ये भी आपको टाइम के उदाहरण दे सकते हो कि टाइम ऐसे काम करता है. ठीक है, ये these 2 examples is okay. आपको क्या भी क्या पर आपको चंद्रमा ढूंढना है, जाके भगवान के धाम में यहाँ से साथ ले जाना छोटा एक चांद सितारा. भगवान को कहना अब रासलीला कीजिए, मैं प्रकाश करूं. हरे कृष्णा. So in the spiritual world, in the real original Goloka Vrindavan, there is no. कृष्ण चंद्र है वह और गौर चंद्र है. जब गौर चंद्र आया तो ये चंद्र मुंह छुपा के ग्रहण लग गया, तो वहां असली कहां से आएगा? यहाँ ही मुंह छुपा के बैठ गया. नहीं, Either past times or Golok. वो चंद्र देवता वहां होगा अपने असली रूप में होगा चंद्र. नहीं Time probably. We read from Acharya's right, early morning in Golok Vrindavan, Krishna woke up, he's going. So there is a movement of Krishna, movement of the Lord. There is a pastimes are taking place. वहाँ टाइम भगवान के पीछे चलता है, यहाँ हम टाइम के पीछे चलते हैं. बस इतना फर्क समझ लो. वहाँ टाइम इज फॉलोइंग कृष्णा, नाउ वी आर फॉलोइंग टाइम. इतना फर्क है. यहाँ टाइम हमको नचा रहा है. हम ये टाइम कहाँ काम करता है? आपने टाइम के बारे में पढ़ा एक और भीष्म पितामह के प्रसंग में टाइम पढ़ा है. ये काल कृतम मने. All the reverses in your life of Pandava is just due to time, Kala. You are great Dharmaraj, your brothers are great devotees of the Brahmanas. Krishna is your close associate and friend and relative. How come there are reverses in your life? Kala kritam manya, it is because of time. और इसके बाद what it means? The reverses in devotees' life is not due to karma, but due to time. But then Bhisham says that time is under control of Krishna. That Bhisham ungli uthaya. Yudhishthira, the time is working under his instruction. युधिष्ठिर मेरा भाई है, इसने मुझे नहीं बताया. बोला तेरा भाई है, तेरी भूल है. ये ब्रह्मा को भी पता नहीं है, मुझे भी पता नहीं है, नारद को, शिव को पता नहीं है क्या करना चाहता है.
यही तो लिखा है, यही तो भीष्मदेव कह रहे हैं कि ये काल इसकी उंगली में ऐसे घुमाता है, किसी को पता नहीं लगता है, और इसलिए अब आपको जो कहा जाए उतना ही करो। आपको द्वारका नाथ मिले हैं तो आप प्रजा को अनाथ मत करो, जाको राज करो। सो काल का वहाँ काल इज अंडर। एक भजन पहले मैं बहुत बड़े हमारे बुजुर्ग को मैंने गाने सुना था, कृष्ण काल तुम्हारी उंगली में, जिसको नचाओ जैसे नचाते हो काल। तो काल भगवान के इशारे से काम करता है। काल, आप कौन हो? कालो अस्मि लोक क्षय प्रवृत्त हो, मैं काल हूँ, भगवान ने कहा। तो अब यहाँ देखिए ये 3 टाइप की श्रेय, ये चार्ट को बाद में देख लेंगे, लेकिन देखो काल में क्या है? ड्यू टू द एटर्नल टाइम, डिवेस्टेशन ऑफ द यूनिवर्सेस, एंड ऑफ द ब्रह्मा's लाइफ। ये 3 टाइप की प्रलय की बात हो रही है। और द्रव्य में क्या है? ड्यू टू द मटेरियल एलिमेंट्स, बाय द फायर ऑफ संकर्षण, एंड ऑफ ब्रह्मा's डेज। ये द्रव्य, द्रव्य का मतलब जिस चीज दुनिया बनी है वो पिघल जाएगी सारी। और गुण ड्यू टू वंस ओन एक्शन, मर जाएंगे अपने कर्म करके। और नीचे करेस्पॉन्डिंग टू दी वंस ओन बॉडी, कंजप्शन ऑफ वंस बॉडी। इसका मतलब ये जो है गुण वाला, ये है नित्य प्रलय के अंदर आएगा। हर एक अपने हिसाब से मरेगा, वो उनके लिए उनका अपना है, नित्य है। जो जन्म लिया है वो मरेगा। और ये जो द्रव्य की है, ये ब्रह्मा जी की रात के समय है और ब्रह्मा जी के 100 साल के बाद की है। पर लिविंग डेड नहीं डाई करती, किसने बोला? आप बड़ी बोलो। गुण का गुण प्रकृति है, प्रकृति कैसे? मैटर इज नेवर डिस्ट्रॉयड। What is this guna destruction? The 3 types of destruction. What is this guna destruction? गुणाज डिस्ट्रक्शन आए श्लोक पढ़ना, देखते हैं क्या आता है। देखो, अब देख लो, मजा ले लो इसका। और ये 10 टाइप ऑफ क्रिएशंस जो है, 6 को कहते हैं प्राकृतिक और 4 को कहते हैं वैकारिक। वैकारिक ब्रह्मा से होती हैं और प्राकृतिक वो स्वर्ग में आती हैं। उसके अंदर क्या होता है हम देखेंगे। ये ऐसे ही पढ़ा है, आपको बार बार मिलेगा, पढ़िए। मेरे ख्याल में 3 बज गए हैं, हम 15 श्लोक तक पढ़ लें, 15 तक पढ़ लेते हैं। कल ये अध्याय और दूसरा 11वां अध्याय भी पूरा हो जाएगा। विदाउट डाउट 12वां शुरू कर सकते हैं। सर्गो नवविधस्तस्य प्राकृतो वैकृतिस्तो यः कालद्रव्य गुणैस्य त्रिविधः प्रतिसंक्रमः। सर्गो नवविधस्तस्य, 9 प्रकार का सर्ग है। प्राकृतो प्राकृत, वैकारिको वैकारिक। तो यह काल द्रव्य गुणै अस्य, 3 काल द्रव्य गुण, त्रिविध 3 प्रकार का, परिसंक्रमः, परिसंक्रमण एनाइलेशन, 3 टाइप। तो इसका मतलब सारा ही कथा बता गई कि 9 प्रकार का सर्ग और 3 प्रकार का। 9 प्रकार का सर्ग को कैसे बांटा? वैकार, प्राकृतिको और वैकारिको। वो एक कम लिखा है क्योंकि आगे बताएंगे। एक ऐसा सर्ग है जो सर्ग भी है और विसर्ग भी है, और वो है कुमारों का। कुमार जो है दोनों में आते हैं, इसलिए उसको अलग किया है। आइए इसको देखें। यहाँ प्रभुपाद जी ने लिखा है कुछ। The scheduled creation and annihilation of takes place in terms of supreme will. There are other creations due to the interaction of material elements such as
which take place by the intelligence of Brahma. एक का मतलब सर्ग और विसर्ग. Later these will be more explained different. ठीक है. 3 kind of annihilation are due to the scheduled time of annihilation of entire universe. इसका मतलब महाप्रलय. Due to the fire which emanate from the mouth of अनंत. ये कोई भी प्रलय होती है अनंत के मुख से आग निकलती है. और तीसरा due to one's qualitative actions and reaction. कर्म के कारण सबका शरीर समाप्त होता है. Having described time in general, Maitreya will describe time in detail in the next chapter. For that purpose, the creation which was previously described in detail is again discussed in summary. Detail में कहाँ की है? किया है ना, थर्ड कैंटो में किया है ना क्रिएशन. तो डिटेल में किया हुआ है, अब उसको समरी में की जाएगी. For easy understanding, it is grouped into 10 types. There are 9 types and 10th type, which is of combination material creation and Brahma's creation. For the same purpose of discussing time, 3 types of annihilations are listed. The time alone called the devastation of all the universes, the daily destruction at the end of Brahma's day, and by the fire from Sankarshan's Maha and other factors, Dravya, and the common destruction through the consumption of the body by an individual's actions. गुणई का मतलब प्रकृति के गुण नहीं है, हमारे अपने जो जिसको कहते हैं आफाल समझते हो, एमाल नहीं, ये हमारी भाषा का शब्द आ गया. हमारी करनी के कारण हमको मरना पड़ रहा है, इसका मतलब ये है जो हमने करा है वो हमको भरना पड़ेगा. For our action there is a reaction, that's what it means. और ये ब्रह्मा जी के रात के समय भी होता है और ब्रह्मा जी के 100 साल के समय भी होता है. हाँ, ये क्या हुआ? आ जाएगा, नाम आएगा इसके बाद. हाँ, आद्यस्तो महतः सर्गो गुण वैष्मयम् आत्मनः द्वैत्यस्त्व अहमो यत्र द्रव्य ज्ञान क्रिया उदयः. अब वो आगे उसका वर्णन है नहीं, क्रिया वाला खत्म हो गया. अब कहते हैं पहला कौन सा सर्ग है? आद्य तो महत सर्गो. पहले महत तत्व की सृष्टि होती है, प्रधान से महत तत्व की सृष्टि होती है भगवान के ग्लैंड से, काल से और जीवों को इम्प्रेग्नेट करने से. गुण वैष्मय आत्मनः, उस समय प्रकृति के तीनों गुण में विषमता आती है. द्वितीय अहमो यत्र, दूसरा सर्ग है अहंकार की उत्पत्ति का. अहंकार सतोगुण में, अहंकार रजोगुण में, अहंकार तमोगुण में पढ़ा है ना ये सृष्टि में. तो अहम का मतलब अहंकार. तो अहंकार की सृष्टि होती है. द्रव्य ज्ञान क्रिया उद्य, और उससे क्या होता है? द्रव्य का मतलब 5 तत्व होते हैं और ज्ञान इंद्रियां और क्या कर्म इंद्रियां होती है. तो मालूम है ना सबको. ये सब अहंकार रजोगुण का, अहंकार तमोगुण, अहंकार सतोगुण है. The first emanation from Supreme Lord for material creation is महत तत्व. ये पहली क्रिएशन महत तत्व की. प्रचार के लिए है. ज्ञान किसके लिए? फॉर द नॉलेज एक्वायरिंग सेंसेस. कर्म किसके लिए? फॉर वर्किंग सेंसेस. ये सिंपली लैंग्वेज है, इसमें कोई कॉम्प्लिकेटेड चीज नहीं है. Starting with this verse, the rest of the chapter is description of various creations. The first is the imbalance of guna caused by the appearance of Mat Tattva, instigated by the Lord Atmanaha. The second creation is that in which there is a appearance of Ahankar, from which arises 5 gross elements, Dravya, the knowledge acquiring senses,
the sense devatas and mind ज्ञान and action senses. ये सब सृष्टि में आप पढ़ के आए, राइट? नेक्स्ट वर्स. भूत सर्गः तृतीयः तो तन्मात्रा द्रव्यः शक्तिमान् चतुर्थः ऐन्द्रियः सर्गो यस्तु ज्ञानक्रियात्मकः. भूत सर्गोत्रीय तीसरा सर्ग कौन सा है? तन मात्रा. भूत सर्ग तृतीय तीसरा सर्ग है 5 भूतों का. 5 भूत पृथ्वी आकाश वायु. तो तन मात्रा द्रव्य शक्तिमान चतुर्थ. अब ये द सेंस परसेप्शन आर क्रिएटेड थर्ड क्रिएशन. तन मात्राएं क्या है? तन मात्रा मीन्स सेंस ऑब्जेक्ट. रूप रस गंध फार्म टच साउंड. फार्म टच स्मेल टेस्ट साउंड. ये थर्ड है. फोर्थ क्या है? द फोर्थ द एलिमेंट एंड फ्रॉम दीज एलिमेंट्स आर जनरेटेड. ये बहुत बड़ी बात है, ध्यान रखना. सूक्ष्म से स्थूल की जनरेशन होती है. फ्रॉम द सूक्ष्म, फ्रॉम द सटल टू द ग्रास. सो पहले हुए तन मात्राएं, उनसे हुआ उत्पत्ति हुई 5 तत्वों की. ठीक है? फ्रॉम सूक्ष्म टू ग्रास. नेक्स्ट, द फोर्थ क्रिएशन इज द क्रिएशन ऑफ नॉलेज एंड वर्किंग कैपेसिटी. सो नॉलेज सेंसेस एंड वर्किंग सेंसेस, ये फोर्थ क्रिएशन है. The third creation is of matter is that of tan matras, which have the capacity shaktiman of producing gross elements. The fourth creation is the senses, which consist of knowledge and action senses. Okay. Next, कल डिस्कस करते हैं, कुछ रह गया तो. 17 तक है ये. 6 type of primary creation is up to verse number 17. वैकारिको देव सर्गः पंचमो यनामयं मनः षष्ठस्तो तमसः सर्गो यस्त्वा अबुद्धिकृतः प्रभो. The fifth creation is that of controlling deities by interaction of mode of goodness, of which the mind is the sum total. So इंद्रियों के देवताओं के क्रिएशन और मन की क्रिएशन, ये 5वां सर्ग है. The sixth creation is the ignorant darkness of the living entities, by which the master act as a fool. ये 6ठा सर्ग है. क्या? अविद्या. क्या लिखा है? तमस्सः. तमस बाय विच तमस सर्ग यह तो अबुद्धिकृत प्रभु. प्रभु का मतलब स्वामी है, और कार्य कैसा करते हैं? अबुद्धि वाला, बिना बुद्धि वाला कार्य करता है. ये 6 प्रकार का सर्ग पूरा हो गया. ये ट्रांसलेशन लंबी चौड़ी है, इसको छुट्टी करते. पढ़ लीजिए, पढ़ लीजिए. क्या? वो नेक्स्ट एक अध्याय आगे आएगा, उसमें अविद्या के 5 पर्व की सृष्टि करेगा ब्रह्मा, उसकी बात कर. वो अविद्या भी वास्तव में, इसको ऐसे समझें आप, ये किसका सर्ग हो रहा है? मटेरियल नेचर का. मटेरियल नेचर के 3 पार्ट हैं. आज याद करो, मटेरियल नेचर के 3 पार्ट है. 3 पार्ट्स ऑफ मटेरियल एनर्जी. नंबर 1 प्रधान, by which material creation is created, that is real. रियल क्रिएशन है भाई, द्रव्य की क्रिएशन, राइट?
Second material nature's creation is avidya. Avidya is another aspect of material nature that is not real, that is illusion. And third is of the Gyan, Vidya. By that avidya is conquered. ये तीनों material energy के हैं. Material energy has three departments, you can say. Pradhan for real creation of material world, avidya for illusion, and vidya to counteract illusion. ये तीनों प्रकृति के हैं. ये एक स्लाइड में आएगा. अगर आपका बहुत अच्छा मन है तो इसको पढ़ लो. अब हमको जाना है. पढ़िए. The demigods in the higher planets of अरे 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 माइक्रोफोन तो लो. ऐसे जा रहे जैसे क्रिएशन ही आपको करनी है. Demigods in the higher planets are called devas because they are all devotees of the Lord Vishnu. Vishnu Bhakta Smrita Deva Asura Tat Viparyaha. All the devotees of the Lord Vishnus are devas or demigods, whereas all others are asura. That is the division of the devas and asura. Devas are situated in the mode of goodness of material nature, whereas asuras are situated in the mode of passion or ignorance. The demigods or controlling deities are entrusted with the departmental management of all the different functions of material world. For example, one of our sense organs, the eye, is controlled by light. Light is distributed by the sun rays, and their controlling deity is the sun. Similarly, mind is controlled by the moon. All other senses, both for working and for acquiring knowledge, are controlled by different demigods. Demigods are assistants of the Lord in management of material affairs. After the creation of the demigods, all entities are covered by the darkness of ignorance. Each and every living being in the material world is conditioned by his mentality of lording it over the resource of material nature. Although a living entity is the master of the material world, he is conditioned by ignorance, by the false impression of being the proprietor of material things. The energy of the Lord called avidya is the bewildering factor of the conditioned souls. The material nature is called avidya or ignorance, but to the devotees of the Lord engaged in the pure devotional service, this energy becomes vidya or pure knowledge. This is confirmed in Bhagavad Gita. The energy of the Lord transforms from Mahamaya to Yogamaya and appears to pure devotees in a real feature. The material nature therefore appears to function in three phases: as the creative principle of the material world, as ignorance, and as knowledge. ये अभी जो हमने आपको बताया वो फार्मूला है. ठीक है. As disclosed in the previous verse in the fourth creation, the power of knowledge is also created. The conditioned souls are not originally fools, but by the influence of avidya, function of material nature, they are made fools, and thus they are unable to utilize knowledge in proper channel. By the influence of darkness, the conditioned soul forgets its relationship with the Supreme Lord. It is overwhelmed by the attachment, hatred, pride, ignorance, and small identification with five kinds of illusion that cause ये है अविद्या के 5 पर्व, ये जो अंग्रेजी में लिखे हुए हैं. अब ये इसमें लास्ट लाइन है, पढ़ लो ये. The meaning is this. Maya has 3 conditions. Yes. Maya has 3 conditions: pradhan, avidya, and vidya. By pradhan, the elements from Mahatattva or earth are created. These are real creation by which the aggregate Samishti and individual bodies, vyasti, of the jivas with gross and subtle bodies are created. By avidya, which bewilders the jiva,
5 types of ignorance, avidya, asmita, raga, dvesa, abhinivesa are created. These are not real. The world composed of real and unreal is produced by pradhana and avidya. By vidya, the knowledge, it destroys the 5 types of ignorance is created. This will explain later in the commentary. इंतजार करना. Okay, so I think we have covered more than enough for today. It's okay? आ रहा कुछ समझ में कि नहीं? क्या ये बंद नहीं हो रहा? Purport of the 11th मूल प्रकृति प्रधान 6 आपने ये पढ़ा है 362 में 362 में इन सब का पढ़ा है आपने. क्रिएशन पहले हो चुकी है. यहाँ समरी है इसलिए इट इज नॉट एग्जैक्टली जैसे वहाँ लिखा हुआ है, थोड़ा सा आगे पीछे है, तो यू हैव टू कोरिलेट बोथ. अब ये कल आज जिसने लिया है, यू कैन